Thank you, sister, and You're welcome. welcome you, sir, Dr. Danny Murano, who is with us. So we welcome you once again in our this week the session. So this is the time for you. You can many times you don't have time for the to chat with the people. So because of that, I am giving you time. That's okay. I have a little time. That's all right. Thank you for your patience, Brother Cigar, and all of you. I appreciate that. God bless you. God bless you, brother. I love you all very much, and I've been Uh, enjoying very much this time with you in our sessions. सो मैं आप सबको प्रेम करता हूं और आप बहुत खुश हूं कि आप लोग के साथ इस समय जुड़ने का मौका मिला। Praise the Lord. If we could have everyone mute, please. I hear a lot of background noise. आ, Could have everyone आप please लोग mute, except for the translator. यदि आप लोग अपना माइक म्यूट करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा। Thank you very much. I appreciate that. Praise the Lord. Uh, Pastor जस्ट अ Cigar मिनट। shared with me that last week there was a little bit of review of some of the things that I had already covered. So I just want to apologize if that was just a repeat of some of the information for you. I wasn't sure of what I had already covered. Forgive me. I have so many classes going right now. Praise God. या इट्स ओके सर। एक्चुअली पास्टर डॉक्टर डैनी मुरानो पिछले सप्ताह का क्लास के लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि जो कुछ बातें हमने पहले सीखा था वो दूसरी बार रिपीट हुआ। ये इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे क्लासेस होता है इनका, तो मालूम नहीं चलता है कहाँ क्या मीन्स टॉपिक वाइज जाने के लिए। सो वो कंफ्यूजन के लिए आप सबसे माफी मांग रहे हैं। Praise God. Today, we're going to get into something brand new. And for the next couple of weeks, I think you're going to be excited about it. And we're going to be speaking about the person of the Holy Spirit and how important our relationship with the person of the Holy Spirit is, both for our lives and for our ministries. अब देखिए आज हम परमेश्वर का वचन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। वो परमेश्वर का वचन है कि पवित्र आत्मा के बारे में, जो हमारे जीवन के लिए और हमारे सेवकाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Praise the Lord. So, let me preface it by saying this, that there's a lot of emphasis in the churches, okay, especially in our evangelism, preaching to people, about having a personal relationship with Jesus, about accepting Jesus as our personal Savior, and therefore having a personal relationship with Jesus. आज देखिए हमारे कलीसिया में प्रभु यीशु के साथ संबंध रखने के बारे में बहुत सारे शिक्षाएं हैं, जैसे प्रभु को ग्रहण करते हैं और प्रभु के साथ किस तरह हमें संबंध स्थापित करना चाहिए उसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे। Well, this is a wonderful concept. And I think those of us who have preached it for many years, we mean well by what we're preaching and we have a good idea of what we're talking about. But the Lord has laid it on my heart to dig a little deeper into this and ask the question, well, practically how do we have a relationship with Jesus Christ when Jesus left the earth 2,000 years ago? अब देखिए आज आप लोग बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग हैं, बहुत साल से आप लोग प्रभु का वचन को प्रचार करते जा रहे हैं। सो आज मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रभु को जब प्रभु को आप ग्रहण करते हो, प्रभु के और आपके साथ कैसा रिश्ता है। जब प्रभु इस दुनिया से छोड़ के चला गया तो हमारा और उसका किस तरह का रिश्ता हमारे और उसके बीच का है। ओह सॉरी। यस। That was my fault. I muted myself. Okay, praise the Lord. And it's very important for us to understand this because many times, as you've heard me preaching in this course, we've learned a lot of religious things, not because necessarily we want to be religious and we want to do things wrong, but we're products of our teaching. As individual as we are, we still are somewhat products of our teaching.
धार्मिक चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। धार्मिक चीजों को महत्वपूर्ण देने का अर्थ ये नहीं है कि जो हमने सीखा है उस बारे में, लेकिन हम कलीसिया में धार्मिक चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। And that's why the Lord has really laid it on my heart in the last few years to refocus my ministry. When I was young, I was very much totally the evangelist, right? Save souls, which is wonderful. But as I matured in the Lord showed me that what the body of Christ is missing more than anything else is pure, solid, apostolic teaching from the Word of God. अब देखिए, बहुत साल पहले जब मैं जवान था, मैं भी एक बहुत प्रचार करता था और इवेंजलिस्ट का काम करता था। उस समय मेरे अंदर भी एक जुनून था कि हमें आत्मा को बचाना है, आत्मा को बचाना है बोल के। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मेरे अंदर इस तरह का एक बोझ डाला। आज प्रभु की कलीसिया को एक आत्मा बचाना ना सिर्फ देख आत्मा बचाना ही को नहीं देखना, हमें आज क्या बोलते उस चीजों को भी फोकस करना चाहिए जो चीज आज हमें और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता कायम करता है। Many of the ideas that we have that we're convinced come from the Word of God actually don't. They come from tradition, they come from um, soulish teaching that we've received. Again, many of these teachers meaning well, not meaning to do evil, not meaning to deceive, but just lacking the proper understanding of certain things in the Word of God. And this is one of them. We preach about accepting Jesus as our personal Savior and having a personal relationship with Jesus. But how? अब देखिए, ये ये बहुत सारी चीजें जो हम अपने जीवन में लागू करते हैं, वो बातें हम बाइबल से सीख के हमको लगता है कि हम बाइबल का ही हम पीछा करते हैं बोल के। लेकिन हमें अपने जीवन में सच्चा एपोस्टोलिक टीचिंग हमारे जीवन में होना चाहिए। जो प्रेरित लोगों ने सिखाया शिक्षा आज एक कलीसिया में ज़रूरत है। सो हम लोग बहुत सारे समय में हम रीति-रिवाज को मानते आते हैं, हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर का वचन से है। So we're going to look at the scripture today, and I want us to see, brother, I need screen sharing. I need to be able to screen share. Yeah. Can you do that for me? We're going to Yeah, look yeah, yeah, yes. we're going to look at some scripture as to how Jesus had purposed for us to have a personal relationship. अब देखिए, हम लोग परमेश्वर का वचन से दिखेंगे कि कैसे यीशु ने हमें यीशु के साथ संगति रखने के लिए कहा कहा है। Let me say this first before we get into the scripture. I ask people, well, how do we have a personal relationship with Jesus? Well, people will say, well, through prayer. Okay, prayer. All right, well, prayer is great, but most people's या understanding of prayer, unfortunately, is very shallow. अब देखिए, मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि हम यीशु आप सब सुनिए, लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। हम कैसे प्रभु के साथ संगति रख सकते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु यीशु के साथ संगति रख सकते हैं। हाँ, प्रार्थना के द्वारा सही है, लेकिन ये एक क्या बोलते हैं, एक बहुत धीमी-धीमी ये एक बातें हैं। Most of the time, when Christians speak of prayer, and even when most churches or pastors or so teach on prayer, they're actually teaching on one aspect of what we call prayer, which is called petition. To petition. To petition means what Jesus said: ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be open to you. Asking God for our needs, asking God to intervene in our situation. Yes, this is prayer, but this is only one sided. This is a one way communication. अब देखिए, बहुत सारे जगह में ये प्रार्थना के बारे में लोग सिखाते हैं, लेकिन प्रार्थना के बारे में हम एक ही पार्ट को सिखाते, दूसरा पार्ट को सिखाते नहीं है। प्रार्थना का मतलब लोग ये सोचते हैं, केवल विनती करना हम लोग सोचते हैं। प्रभु के सामने केवल विनती करना को हम प्रार्थना सोचते हैं।
Many times I'll hear from Christians. They'll even write to me or ask me in a session, I just don't seem to hear from God. I pray and I believe in God, and God answers my prayers many times, but I can't hear from God. So they're complaining about a one-way communication because what they're practicing, and you might want to write this word down. I don't know what the word is in your language, Brother Cigar. Petition. They're petitioning God. Yeah. They're coming before God and they're asking God for help, asking God for things, asking God for their needs. This is petition. अब देखिए, हम लोग कभी कभी हम लोग एक तरफा परमेश्वर से बात करते हैं। जैसे हम परमेश्वर के सामने हम अपना निवेदन को रखते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसको हम सुनते नहीं है। इसीलिए लोग प्रार्थना का एक ही पहलू को के बारे में लोग सिखाते, दूसरा पहलू को भूल जाते हैं। A petition is wonderful, and we should be petitioning God. Jesus tells us, and the Bible tells us everywhere यस। that we should come before God and ask Him for our needs and ask Him for His help. Okay? But this is just a one-way communication. This is us speaking. I won't even say speaking to God, I'll say speaking at God. And we really don't even expect an answer most of the time. It's not a communion. Okay? It's not a communion. It's like me right now. Right now I'm having a one-way communication. You're just listening. When we get done the teaching and I say, let's talk, or does anyone have any questions? Now it becomes a two-way communication. अब देखिए, पिटीशन जिसको हम बोलते हैं अनुरोध, एक तरफा अनुरोध अच्छी बात है। प्रभु के सामने हमें प्रार्थना में आने की जरूरत है, आप सबको और मुझे भी। लेकिन जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हमारा जो परमेश्वर के साथ जो वार्तालाप है वो एक तरफा होना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर के वार्तालाप वो दोनों तरफ का होना चाहिए। जैसे अभी जो है ये एक तरफा, मैं केवल आपको शिक्षा दे रहा हूं, आप सुन रहे हैं। लेकिन जब मैं बोलता हूं आइए हम बात करते हैं, हम सब मिलके बात करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक समूह में मिलके एक दूसरे का बातों को सुनना। The most हमारी re- प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए। the most rewarding relationships that we experience on a human level are two-way communication. Relationship is a two-way communication. If how many of you are married? If you're married, what would it be like to have one-way communication? Wives, what would it be like if your husband always just spoke to you and spoke to you and spoke to you and you could never speak back to him? You would not be very happy in your relationship, and vice versa. अब देखिए, किसी के साथ हम संबंध रखते हैं तो ध्यान से सुनिए पास्टर लोग। यदि हम किसी के साथ संबंध रखते हैं तो हम दोनों, जिसके साथ संबंध रख रहे हैं उसके साथ हमारा वार्तालाप दोनों तरफ का होना चाहिए। जैसे आप कितने लोग शादीशुदा हैं, यदि आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी आपसे बोलते रहेगी, यदि आप अपने पत्नी का जवाब नहीं दोगे तो वहां वहां कैसा स्थिति बनेगा। सो इसीलिए किसी भी संबंध का ये दोनों तरफ वार्तालाप होने की जरूरत है। And especially if we speak about a personal relationship. Personal means intimate. Yeah? Not a distant relationship. Okay, we have relationships with the government, so to speak. We have relationships with schooling. We have relationships with the bank. But these are business relationships. These are not personal. But when we speak about a personal relationship, then we're expecting something, an intimate exchange between at least two parties. अब देखिए, जब हम किसी के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, अब देखिए हमारा सरकार के साथ संबंध है, बैंक में जाते हैं संबंध है, और अन्य अन्य जगह में संबंध है, वो संबंध पर्सनल संबंध नहीं है, वो घनिष्ठता नहीं है। वो हमारा एक व्यापार करने का संबंध है। लेकिन जो घनिष्ठ संबंध उसको कहता जाता है, जब दो भी लोगों के बीच में जो घनिष्ठ संबंध रहता है उसी को बोलते हैं हमारा व्यक्तिगत संबंध।
So a personal relationship uh, cannot be had just through our traditional understanding of prayer, okay? Which, as I said, is usually petitioning. That's a one-way um, request, right? That's a one-way request to God. That's not a communion. That's not two people communing with one another. Same with the Bible. We turn it over on the other side. Same with the Bible. It's a one-way communication. अब देखिए ये व्यक्तिगत जो संबंध होता है, आप ध्यान से सुनिए, जो व्यक्तिगत संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंध एक तरफा वार्तालाप नहीं है, जिसको हम बोलते हैं केवल विनती रखना। हम केवल बोलते रहेंगे परमेश्वर से, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत जो संबंध है, वो दोनों तरफा होने की ज़रूरत है। And that's a one-way communication from God's side, okay? This is what God has given us as his truth. Even his love is revealed in the scriptures, especially through Jesus. Yeah, that's how we learn about Jesus, is in the scriptures. But this can only be so personal because it's history. Okay, it's an accounting of events. It's things that people that Jesus taught, that the prophets taught, and so on. But this is a one-way communication, a one-sided communication. This is God's record of what he initially wants us to know. अब देखिए, लेकिन बाइबल में जो संबंध है, जो व्यक्तिगत संबंध है, ये बाइबल में एक तरफा व्यक्तिगत संबंध नहीं है। परमेश्वर ऐसा एक तरफा व्यक्तिगत संबंध नहीं चाहता है। बाइबल का जो संबंध है, वो दो तरफा संबंध है, जो परमेश्वर और हमारे बीच का है। And it's the same. Many people have complained in their experience. They have the same experience when they go to church. They feel again that this is a one-way communication. They come to church, they sit, okay? They have their one-way communication with God. They worship God, they praise God, they tell God how much they love him and how thankful they are. Then they sit, and then someone preaches the Bible to them or teaches the Bible to them. This again is a one-way communication. अब देखिए, बहुत सारे विश्वासी लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए, यदि आप लोग वीडियो जो ऑफ किए हैं, यदि ऑन कर सकते हैं तो प्रीचर को भी लगेगा कि आप सुन रहे हैं उनका बात बोल के। यदि आप ऑन कर सकते हैं तो आप ऑन करिए, यदि नेसेसरी है तभी ऑफ करिए। अब देखिए, ये बहुत सारे विश्वासी लोग जो कलीसिया में जाते हैं, वो लोग भी एक तरफा संबंध को देखते हैं। वो लोग जाते हैं, कलीसिया में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बस खत्म हो जाता है। So none of हाँ, these लेकिन जब जब पास्टर या कोई पादरी प्रचार करता है, या पास्टर और पादरी जब प्रचार करता है, वो भी उसका वचन भी सुनते हैं। ये एक तरफा का ये वार्तालाप वो लोग सुनते हैं। या so प्लीज none गो of अहेड। these yes. So none of these three things on their own fulfill a definition of a personal relationship, and more so a personal relationship with Jesus. So the question is, how do we have this deep, passionate, intimate, romantic relationship with our Lord Jesus? How do we have that when he's not on the earth anymore? He left the earth 2,000 years ago. ओके, अब देखिए, जिन जिन बातें मैंने आपको अभी तक बताया, ये बातें प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध को नहीं दर्शाते हैं। तो अभी आप हमारे और आपके बीच में प्रश्न है, हम कैसे प्रभु यीशु के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापना कर सकते हैं, जो हम प्रभु का बात भी सुने, अपना बात भी प्रभु को बताएं। उस बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। Well, if we look in the Word of God, we can see where Jesus told us how he was going to provide for the means for us to continue to have a personal relationship with him. In the scripture we're going to look at, John chapter 14,
if you want to turn in your Bibles, if you have your Bibles, John chapter 14. We're going to look at what Jesus said he would do to have a personal relationship with us. अब देखिए, यदि हम यूहन्ना 4 का 16 में यदि हम देखेंगे, तो यहाँ प्रभु यीशु कहता है कि किस तरह प्रभु यीशु हमारी हर ज़रूरतें पूरा करेगा और किस तरह हमें परमेश्वर के साथ संबंध रखना चाहिए, उस बारे में प्रभु का वचन यहाँ क्या कहता है। Amen. So this scripture that we're looking at, the background of this was right before Jesus was about to be taken, arrested, and ultimately crucified. And this is the last conversation that Jesus is having with his most intimate followers. So apparently, this subject was the most important thing that Jesus wanted to make sure his followers understood. ओके, अब देखिए, जो यहाँ सॉरी सर, कैन यू जस्ट रिपीट दिस वर्स? इट इज जॉन चैप्टर John chapter 14, and we're going to read verses 16 through 20. अब देखिए, आप लोग यदि बाइबल है तो लिख लीजिए, सॉरी, जॉन चैप्टर 14, जो यूहन्ना का रति सुसमाचार, उसका 14 अध्याय का 16 से 18 पद तक, यूहन्ना अध्याय का 16 पद से लेकर 18 पद तक, ये प्रभु यीशु सूली पे चढ़ने से ठीक पहले की घटना है। ये प्रभु यीशु का, ये हम लोग ये कह सकते, प्रभु यीशु का अंतिम ये अपने चेलों के साथ वार्तालाप है। Now, this was a very hard time for the followers of Jesus. These are the disciples, these apostles that we hold up almost as demigods, okay? These apostles, they were just people like us, okay? And they had lived with Jesus, walked with Jesus, watched Jesus' ministry and life for 3.5 years. And they had become very intimate with Jesus. And now Jesus is telling them, I have to leave you. अब देखिए, ये जो यहाँ देखिए, यदि ये यूहन्ना रति सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 16 से 18 में पढ़ेंगे, तो ये प्रेरित लोग हैं जो यीशु के साथ रहते थे, यीशु के साथ चलते थे, यीशु के साथ उन लोग का एक अच्छा संबंध था। लेकिन यहाँ यीशु अभी उन लोग को बोल रहा है कि अब मैं तो निकलने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, अब आप लोगों को मेरे बिना रहना है, बोल के यीशु उनको कुछ बोल रहा है। कैसे यीशु के बिना वो लोग रहेंगे, उसके बारे में यीशु यहाँ कह रहा है। Think for a moment how you would have felt. You've been waiting for this Messiah. Since you were a child, you were told the Messiah is coming. When the Messiah comes, he's going to fix everything. He's going to make life beautiful. He's going to reveal who God really is and bring back the wonderful kingdom of God. Okay? You find this Messiah. Remember, Peter declared, "You are the Messiah, the Son of the living God." You find this Messiah. You're walking with him for over 3 years. You're experiencing incredible things, and all of a sudden, he tells you, "And now I have to go." अब देखिए, आप सोचिए, यदि आप उस जगह में होते तो आप वो मसीहा का इंतजार करने वाले होते। आपको मालूम होता मसीहा जब आएगा तो सारा कुछ बदलेगा, आपकी जिंदगी बदलेगी और मसीहा का राज्य में आप प्रवेश करेंगे, सब चीज आपके जीवन में ठीक ठाक होने वाला है। यदि आप ऐसा विश्वास करते, उसी समय यीशु मसीह आपसे कहता कि नहीं, मुझे तो अब आप लोग को छोड़ के जाना है। आप कैसा महसूस करते अपने जीवन में? Not only does he tell them that he has to go, but there's also an environment now of hostility against them. There's an environment of persecution against Jesus, against his followers, and they're afraid. They're afraid that they can be tortured, imprisoned, killed. They have no idea what's going to happen. And their security has been, well, Jesus is with us. He won't let anything happen to us. But now Jesus is saying, I have to go back to my Father. अब देखिए, यहाँ का स्थिति आप समझिए
जिस समय यीशु ने ऐसी बात की, वो समय बहुत भयानक समय था। लोग सताव होके जाना पड़ रहा था, लोग मुसीबत में थे, तकलीफ में थे। तो उस समय वो चेले लोगों का सुरक्षा केवल यीशु मसीह था, क्योंकि यीशु, वो लोग सोच रहे थे कि यीशु उनकी देखभाल करेगा, यीशु उनको बचाएगा हर चीजों से। लेकिन उसी समय यीशु बोल रहा है कि मुझे आप लोगों को छोड़ के उस समय जाना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं उन लोगों के जीवन में किस तरह का परिस्थिति पैदा हुआ होगा। How would you feel? Think about it. How would you feel? Would you not be afraid? Would you not be sad? Would you not be confused? What is going on? I thought you came here and this is the answer, and now things are going to be different, and now you're going to leave us. And this is why Jesus अब found देखिए, it so important to share the next part of heaven's plan. आप इस समय कैसा महसूस करते हैं? आप हो सकता है वो मसीहा जो आपका सब कुछ है, आपने सोचा हो सोचे होते। ये आपको लगता होगा आपके जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो मसीहा आपको संभाल लेगा। यदि ऐसे सोचते समय में यीशु मसीह आपसे कहे कि मैं तो तुम्हें छोड़ के जाने वाला हूँ, तो आपके मन में कैसा विचार आया होगा? अब देखिए, यहाँ यीशु मसीह ना केवल एक पार्ट को बता रहा है, यहाँ यीशु मसीह इस वचन में दूसरी पार्ट को भी यीशु मसीह कह रहा है। So for the followers of Jesus, they feel like this is the end. This is the end of the plan, and it doesn't seem like there's going to be a happy ending, okay? A good outcome. So Yeah. Jesus wants to tell them, no, this is not the end. This is the beginning of the plan. So let's go ahead and read the scripture, John 14, 16 through 20, if someone will read it. या अब हो गया, क्योंकि यीशु हमको छोड़ के जाने वाला है, सब कुछ खत्म हो गया। अभी हम लोग अपने जीवन, अपने प्लान में सक्सेस होने वाले नहीं है बोल के वो लोग सोचे, लेकिन यीशु उन लोगों को परमेश्वर का वचन से कुछ बातें कह रहा है। वो बातें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 16 से लेकर 18 में। किसी के पास हिंदी बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। Do you want us to read in Hindi? Yes, go ahead and read in your language, brother. या John कोई 14, एक बहन, 16 through 20. कोई एक हिंदी में पढ़ लीजिए तो यूहन्ना 14 अध्याय का 16 से लेके 20 तक। यूहन्ना 14 अध्याय का आइए मैं पढ़ दे रहा हूं आप सबको, सबके लिए। लेट मी रीड फॉर ऑल ऑफ अस। मैं Okay. पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण देखता है और ना उसे जानता है। तुम उससे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी ही देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखेंगे, इसीलिए कि मैं जीवित रहता हूं, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। Amen. Amen. So what is Jesus letting them know here? He's telling them that his ministry, I want you to hear this well. His ministry on the earth is coming to an end. He has fulfilled his mission in this 3.5 years of coming to the earth. And now he's going, of course, to the most important part of his mission, where he's going to lay down his life to pay for our sins, and he's going to rise from the dead to purchase eternal life for us. हेलो, Can you hear me? सुनी दे दाई मेरा आवाज? Can you hear me, brother? Yeah, yes sir, can you just Repeat it.
repeat this one, sir? Yeah, sure. So Jesus Yes, is I can hear you. Jesus is letting these followers know now that his part of the Godhead's mission, okay, the Godhead, Father, Son, Holy Spirit, his part of the mission is coming to an end now. Okay, he has come for 3.5 years. He has revealed who the Father is, he's revealed the kingdom of God, and now he's going to complete the most important part of his mission, which is to lay down his life as a sacrifice for our sins and to overcome death and the devil by rising from the dead. Did we lose you, brother? Yes, sir. Actually, यहाँ Are you there? yes, sir. Yeah, I am here. Can you Okay. hear me now? Yeah, Yes. let me translate. Actually, Okay. यहाँ यीशु अपने चेले को ये बात बताना चाह रहा था। देखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की मीन्स ये पुत्र का मिशन, पुत्र का काम खत्म हो गया। जिस मकसद से पुत्र आया है, उसका मकसद खत्म हो गया और उससे दूसरा पवित्र आत्मा का सेवकाई शुरू होने वाला है। ये बारे में यहाँ प्रभु यीशु बता रहा है। See, now the plan of heaven is transitioning into a more personal plan. Jesus had come, he's preached to everybody, he healed everybody who wanted to be healed, who had faith for it. He cast out the demons, he did all these things to the masses to declare the kingdom of God. But now, the kingdom of God, listen to me well, the kingdom of God will only be experienced by those who possess the Holy Spirit. अब देखिए, यहाँ आपको समझने की बात है। यीशु ने लोगों को परमेश्वर का वचन प्रचार किया। यीशु ने भीड़ को अपने पास बुला के परमेश्वर का वचन को प्रचार किया और लोगों को प्रभु के बारे परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में बताया, लोगों को चंगा किया। लेकिन यहाँ अब इससे भी महत्वपूर्ण बात है, यीशु बोल रहा है कि परमेश्वर का राज्य अभी उन लोगों का व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करने की जरूरत है जिसके पास पवित्र आत्मा है। Jesus says, you believe that you've been so intimate with me, that you've known me so well, that you've been so close to me. But the Holy Spirit has only been with you. How was the Holy Spirit with them? In Jesus. Jesus was filled in the Holy Spirit. So the Holy Spirit has been with them. But he says to them now, the Holy Spirit, when I go back to the Father, I will send you the Holy Spirit, and the Holy Spirit will no longer just be with you. The Holy Spirit will now be in you. अब देखिए, यीशु यहाँ अपने चेले को कह रहा है, उस समय भी यीशु पवित्र आत्मा उनके पास था, यीशु के पास पवित्र आत्मा था, क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। यीशु ने कहा, मैं अब यहाँ से जाऊंगा और अपने पिता से अनुरोध करूंगा कि पिता आपको पवित्र आत्मा भेजे। अब पवित्र आत्मा ना केवल तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर रहेगी पवित्र आत्मा। आमीन। Amen. So this is a completely different level now. Yes, you've felt the Holy Spirit. You've seen the Holy Spirit's work and power and love through me. But now you are going to become one with me by the indwelling of the Holy Spirit. You will become one with the Father, one with me, the eternal Son, through becoming one with the Holy Spirit. When the Holy Spirit comes to live in you as God's temple. अब देखिए, यहाँ यीशु का कहना यह था कि तुमने पवित्र आत्मा का कार्य को देखा, पवित्र आत्मा को देखा, पवित्र आत्मा का बड़ा बड़ा चीजों को देखा, लेकिन अब तुम जो देख रहे हो वो अलग सा है, क्योंकि पवित्र आत्मा
खुद तुम्हारे अंदर रहेगी और तुम्हारे अंदर से अंदर होके तुम पिता के साथ और पुत्र के साथ पवित्र आत्मा में होके एक साथ में एक संबंध बना पाओगे। ये यीशु मसीह अपने चेले को कह रहा है। Notice what Jesus says. Jesus says that he is going to send them the Spirit of truth. Watch this. Whom the world cannot see and whom the world cannot receive. Okay? And when Jesus was walking on the earth and he was doing things, people could see Jesus. Okay? And they could also receive Jesus. But when the Holy Spirit comes, this is more intimate, this is more personal. The Holy Spirit can only be seen and only be received, and he can only dwell in those who truly have surrendered their lives to Christ. अब देखिए, यहाँ हम सबको समझने की एक बात है कि यीशु उनसे कह रहा है यीशु उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हें एक सत्य की आत्मा को भेजूंगा जो जिसको संसार नहीं देख सकता है, लेकिन वो सत्य की आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगी। जब यीशु चलता फिरता था लोग यीशु को देखते थे, लेकिन अब जो है अब जो है ये सत्य की आत्मा को लोग ना संसार के लोग देख पाएंगे, ना तो संसार के लोग उसको महसूस कर पाएंगे, लेकिन वही लोग उसको महसूस कर पाएंगे, वही लोग देख पाएंगे जो अपने पूरी जिंदगी प्रभु के हाथों में समर्पित किया हुआ है। Notice आमीन। what Jesus says. He says, I will not leave you as orphans. I will not leave you alone. You will be able to feel my presence. You will be able to know my presence. Watch, you will be able to hear my voice, and you will be able to understand what I want from you, because the Spirit of God is not just going to be with you from the outside anymore. The Spirit of God is actually coming to take up residence inside of you. अब देखिए, यहाँ प्रभु यीशु का कहना आप ध्यान से सुनिए। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा आएगी और हमारे अंदर वास करेगी। इसका मतलब है हम यीशु को समझ पाएंगे, यीशु की बातों को सुन पाएंगे और यीशु को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। So now, one of his disciples, if we look down in verse 22, one of his disciples, Judas, not the betrayer, not Judas Iscariot who betrayed him, but another Judas, says to him, asks him the obvious question, Lord, what do you mean? What are you talking about? How are you going to reveal yourself to us, but not to the world? See, this doesn't make any sense to him, because his understanding is the only way Jesus could reveal himself is to be on the earth physically and be seen. So, how is Jesus going to reveal himself to his believers, but not to the world? Are you there, brother? Did we lose you? Brother Sagar? Is there someone else who can translate? Is there someone else who can translate until Brother Sagar comes back? Are you there, brother? Yeah, yeah. Can you hear me now? Yes, you're breaking up, but I can hear you.
Yeah, I'm here. Let me translate. Okay. अब Okay. देखिए यहाँ यहूदा जो इस्करियोत नहीं है, ये दूसरा यहूदा के बाद दूसरा यहूदा ने यीशु को पूछा कि प्रभु आप कैसे अपने आप को हम हमें You froze up Hello? again. Yeah, go ahead, brother. दिखाओगे ताकि लोग संसार Yeah. Yes, sir. Can you hear me now? Yes, now I can. Did the people understand what you said? Yeah. Let me. Yeah. Let me translate once again. देखिए Okay. Okay. जो सॉरी यहूदा जो इस्करियोत है, वहां ये प्रश्न पूछ रहा है कि प्रभु कैसे आप अपने आप को दर्शाओगे ताकि लोग संसार के लोग आपको जान ना सके. या प्लीज कंटिन्यू. Okay. So Jesus tells them, look in verse 25. He says, I've told you these things while I'm still with you. Okay. But the helper, the comforter, the counselor, and several other descriptions, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name and in my place, he will teach you all things. अब देखिए यहाँ उसके बाद देखिए तो 25 पद में बोल रहा है, या यीशु मसीह फिर से बोल रहा है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो आएगा और वो आप लोगों को सारे बातें समझाएगा. So Jesus has, amen. Jesus has many more things to teach us, many more things to share with us, but he's not going to share it in the human form anymore, excuse me, from the outside as an independent presence. But he's going to make it even more intimate. He's going to become one with us by sending the Holy Spirit to us to live inside of us. So now we no longer hear the word of God or the word of Jesus from the outside, merely in the physical, but we're going to hear Jesus and experience Jesus and commune with Jesus from the inside of our being. अब देखिए यीशु को बहुत सारे बातें हमको सिखाना था, तो यीशु इसीलिए यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह भेज के वो सारे बातें को हमें सिखाएगा. इसका मतलब ये है कि अब हम फिजिकली यीशु का बात को नहीं सुन सकते हैं, यीशु को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा हम पर वास करती है, हम यीशु की बातों को यीशु को महसूस कर सकते हैं और यीशु की बातों को हम जान सकते हैं. You see the difference? Do you see the difference? हमें This is much more intimate. क्या आपको फर्क यहाँ नजर आया? This is much more intimate. Yep. This is one with God. So it's not we're praying up to heaven, we're praying up to Jesus up there somewhere in the heaven and hoping that somehow he sends down his word from heaven to us, or that we get his word from the book, the Bible, but we actually have Christ living right within us when we receive the Holy Spirit to come inside of us. अब देखिए यहाँ आपको फर्क नजर आया होगा. अभी हम प्रभु की बातों को सुनने के लिए, प्रभु की बातों को समझने के लिए ना प्रार्थना करना है. अब प्रार्थना से भी बड़ा प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध है. जो यदि पवित्र आत्मा हम पर आती है तो पवित्र आत्मा हमें और परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाती है. Have you ever asked yourself this question? I know I have. How can there be so many people on the earth who claim to be Christian,
who claim to be Christians, Yeah. who go to church, who say they believe in Jesus, even that they believe the story of Jesus, that he was crucified, that he rose again, that he's our Savior, and so on, came to take away the sins of the world. But yet these people only still seem to have a religious practice. They have so many rituals and ceremonies and so many barriers that they have to go through. And it seems like they're always crying up to this invisible deaf God. अब देखिए, ये इस तरह का जो अनुभव है, बहुत सारे विश्वासी लोग अपने कलीसिया में वो लोग वो विश्वासी लोग का होता है, क्योंकि वो लोग अपने आप को मसीह बोलते हैं, लेकिन जब कलीसिया में जाते हैं वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, एक तरफा प्रार्थना करते हैं, एक तरफा प्रभु के साथ संबंध रखते हैं, और जिसके द्वारा उन लोगों की प्रार्थना सुनाई देने में बहुत दिक्कत होती है। And I'm not talking only about the old traditional, churches like the Roman Catholic Church and the Orthodox Church, but even in the modern churches, there's this feeling of everybody looking up toward the sky in a sense, talking to this invisible Jesus up there somewhere. And many Christians, express the अब fact देखिए, that they don't hear God. Are you there, brother? yes sir, yes, I'm here. Yeah, can you just repeat this one, sir? Yes. How come? It's not just the old traditional churches, okay, the Roman Catholic and the Orthodox, and that have all these candles and ceremonies, but even in the modern churches where people are in jeans and very late, it still has many times a feeling of distance, like they're praying, they're worshiping up, they're looking at the sky, they're looking at heaven. Jesus is up in heaven and everything is so far away. But look at how Jesus is explaining this. Jesus is saying not far away at all. No, you can't get any closer, right inside. अब देखिए, ये आ, आ, जो मोड ये पहले का जो चर्च में ऐसे बातें होती थी, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च में वो लोग प्रार्थना करते थे तो स्वर्ग की ओर देख के प्रार्थना करते थे, लेकिन वो लोग जब भी प्रार्थना करते थे स्वर्ग की ओर देख के प्रार्थना करते थे। उनका कहना ये था कि प्रभु उनसे बहुत दूर है और लंबे लंबी प्रार्थना करना ताकि प्रभु उनसे बहुत दूर है। लेकिन प्रभु का कहना है प्रभु हमसे दूर नहीं है, वो प्रभु हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर हमारे साथ है। Amen. Amen. We'll get into this more even next week, but let's close this Yes, session. sir, please. Let's close this session with what Jesus says here. He says that he will send us the Holy Spirit, and the Holy Spirit will teach us all things. He also says that the Holy Spirit will bring to our remembrance the things that Jesus has already taught us. अब देखिए, हम इसके बारे में अगले सप्ताह में ज्यादा बात करेंगे, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु क्या कह रहा है, मतलब हम प्रभु अपने पवित्र आत्मा भेजेगा और पवित्र आत्मा हमें सारे चीजों का भेद हमें बताएगा। So how do we have what Jesus has already taught us? अब देखिए, जो यीशु ने पहले से हमें सिखाया है, हम उसको किस तरह समझते हैं, किस तरह सुनते हैं। We have the scriptures, don't we? So Jesus is telling us already in this conversation that we need the Holy Spirit to tell us what God's will is for the future, to teach us for the future. We also need the Holy Spirit living inside of us
to interpret the scriptures for us, to make us understand what the scriptures really mean. There are so many Christians and Christian ministries and churches for the last 2,000 years trying to understand the scriptures and what Jesus has said without possessing the Holy Spirit. अब देखिए, आज हम कैसे परमेश्वर का योजना, हमारे वर्तमान और भविष्य का परमेश्वर का योजना कैसे हमें मालूम कर सकते हैं, और कैसे हम परमेश्वर का वचन जो है जिसको हम पढ़ते हैं उसको कैसे समझ सकते हैं। प्रभु का कहना है ये पवित्र आत्मा के मदद से, पवित्र आत्मा के सहायता से प्रभु का भेद को हम जान सकते हैं और परमेश्वर का वचन का सत्यता को हम समझ सकते हैं, जो बहुत सारे कलीसिया अभी भी वो समझ नहीं रहे हैं। See, it was never Christ's plan to leave the earth and then leave us to try to figure out with our human intellect what the scriptures mean, or to try to figure out what Jesus and the Father's will is for us apart from God's presence. So Jesus is actually stepping it up. Jesus is saying, you thought it was great when I'm here with you, but I'm telling you, I'm going to make it better. I'm not just going to be here with you. I'm going to be here in you. अब देखिए, यीशु का कहना ये था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ये नहीं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। अब देखो, मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं यहां से जाने के बाद मैं तुमसे अलग नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर हूं। यीशु ये बातें अपने चेले को कह रहा था। Amen. I want you Amen. to really think and meditate on that truth this week before we come together next week. I want you to really, really ask the Lord to make that real to your understanding. What Jesus has provided for us, and the Father and the Son have provided for us by sending us the Holy Spirit. And yet so few Christians, so few Christian leaders have really experienced the depth of this beautiful relationship with the Holy Spirit. अब देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इस बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। अगले सप्ताह हम आएंगे तो जो जो यीशु ने, जो परमेश्वर पिता ने ऑलरेडी हमको जो दिया है, वो चीज, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहने के लिए उसको हम किस तरह अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत सारे मसीह अगुआ लोग वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में उसका महत्व वो समझ नहीं रहे हैं। Amen. So before we close in prayer here, is there anyone who has a question or a comment, something they'd like to say? We have a couple of minutes. आपके पास अब जो हमने आज परमेश्वर का वचन सुना है, इसके बारे में कुछ चीजें कहना है, कुछ प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। आज का मैसेज समझ में आया? हमें परमेश्वर के साथ संबंध कैसे बिताना है, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध ना केवल प्रार्थना का संबंध, एक तरफा संबंध नहीं होना चाहिए। हमारा परमेश्वर के साथ ये दो तरफा संबंध होने की जरूरत है। जैसे सर ने बताया, यीशु अब हमारे साथ नहीं, यीशु हमारे अंदर है। तो यीशु यही अपने चेले लोग को बताना चाह रहा है। यदि आपके पास कुछ कमेंट है या तो कुछ चीजें आप शेयर कर सकते हैं। सब लोग को समझ आया? अभी मैं आपको एक मिनट, आई विल अलाउ एवरीबॉडी टू अनम्यूट। आप लोग अपने आप अनम्यूट कर सकते हो। यस। किसी के पास है कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस बहुत लंबा हुआ इसीलिए ज्यादा ट्रांसलेट नहीं हो पाया। लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग Hello. Hello. Yeah, please. I have one question, sir. Okay. Kingdom of God exposed to heavenly what? Kingdom of God is as compared to the heavenly one.
Is that Okay, thank you. my understanding correctly? The question? Yes, I do. Yeah. To me, I know there are many teachings out there. To me, there's no difference between these two things. I don't see a difference in scripture. Uh, this idea of heaven has been put into so many Christians' minds that we're going to live in heaven, okay, and it's going to be a heavenly kingdom. But when we study the scriptures, that's not really what the scriptures say. It's not so much us going to the kingdom of heaven, it's more the kingdom of heaven coming down to us, Oh. Man. right? आपको Thank समझ you. में आया? हम Thank लोग you. Thank you. परमेश्वर का राज्य में हम लोग जाने की बात नहीं, परमेश्वर का राज्य खुद हमारे पास आने की बातें हैं बोल के पास्टर ने बताया. या थैंक यू सर. Amen. और किसी के पास प्रश्न है? Jesus is returning, right? He's coming to आपको rule on the earth for 1,000 years. आपको मालूम है यीशु मसीह लौट के आ रहा है 1000 साल वो पृथ्वी में राज करने के लिए. Amen. And we can teach more on that. That's a big subject. Someone else have a question? और किसी के पास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या तो कुछ नया कुछ सीखा है तो आप बता सकते हैं आज के टॉपिक में. नहीं तो हम अगले सप्ते नेक्स्ट वीक यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. आप लोग अगले सप्ते भी प्रश्न पूछ सकते हैं. यही बारे में हम आगे बढ़ेंगे कि प्रभु के साथ कैसे घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए. हमारा घनिष्ठ संबंध कैसे होना चाहिए बोल के. Amen. Should we Dr. pray Danny, then, brother? may I ask you, can you just pray for all? Yeah, you can pray for all the pastors in Nepal and North India. Okay. Father, in Jesus' name, we just pray right now, Lord, right now, in the name of Jesus. Holy Spirit, as we've spoken of you so much today, Holy Spirit, that you would make your presence real and felt and experienced and understood by all the pastors and leaders in Nepal and North India. You want to translate, brother, or no? Yes, yeah, I think no need of translate. You can continue. No need to translate. Okay, so Lord, I just pray right now in Jesus' name that most importantly, your shepherds would know you intimately and personally and from the inside, not just from the outside, not just from preaching, not just from the Bible, not from just praying to you, but that you would have intimate communion with them, Lord, that they would come to know you personally, Holy Spirit, and develop a deep and rewarding relationship with you, Holy Spirit. Excuse me. And that they would also know your power and that you would work through them, Lord. That you would work through them to lay their hands on the sick, that the sick would be healed, to cast out demons, to raise the dead, to cleanse the lepers, to speak with the anointing, to preach and teach with the anointing, the power. The anointing of God breaks the yoke of demonic power off of people. So, Holy Spirit, I ask that you manifest yourself, as you said in your word, which we'll look at again next week. As you said in your word, Lord, in John chapter 16, that those of us who believe in you, you and the Father will come and make your home in us, and you will manifest yourself to us. You will manifest yourself through us. So this I pray for the pastors and leaders in Nepal and North India. I also pray, Lord, that you would protect them. Divine protection, divine security, legions of warring holy angels round about these pastors and their homes and their families and their ecclesia and their communities. Keep them safe, Lord. Keep the wolves in sheep's clothing away from them. Keep the evil demons and evil people serving demons away from them, Father. I ask you to provide for them,
I thank you that you shall supply all our need, not some of our need. You said you shall supply all our need through Christ Jesus. And this we believe, Father. So I ask you to provide abundantly, exceedingly, and abundantly above all that we can ask or think according to your will, Lord. And I ask you also to go beyond providing and to prosper these men. Prosper them, Lord, and increase their faith. Increase their faith to believe you, Lord, to receive from you. That as they receive spiritual riches from you, that you will also provide for them earthly resources and riches that they need to do the practical work, first for their lives, for their homes and families, that they and their wives and their children and their relatives are taken care of, and their homes are provided for. And secondly, that they would have over and above, as the Apostle Paul wrote in 2 Corinthians chapter 8, that we would have over and above that we can do charitably to others who are in need. So I pray for this, Father, and I pray that you would perfect them, that they be filled in the spirit of wisdom and revelation, in the knowledge of you, Lord. Amen. That they would know the power of your resurrection along with the fellowship of your sufferings. I think they know a lot about the fellowship of your sufferings, but I pray that they would know the power of your resurrection, being made conformable to your death, they may also attain unto resurrection life, Lord. Not only the resurrection life of when you return, but walking in resurrection life now. That the words that they speak under your inspiration, Holy Spirit, would be spirit and would be life to those who hear, Lord. Bring eternal life, bring healing, bring deliverance, bring provision, bring prosperity to the hearers, Lord, in Jesus' name. And we break the spirit right now. We break the spirit of persecution over that part of the world in the name of Jesus. We take authority. We tread on serpents and scorpions and every deadly thing that exalts itself against the word of the living God. Lord, free these men, and fill them with boldness and courage, not to be afraid, but to go and to preach your word in all boldness, in all authority, under the anointing of the Holy Spirit, with your revelation. And we give you all the praise and glory for this. If anyone needs healing today, physical healing in their bodies right now, I release that. Holy Spirit, heal in Jesus' name right now. Anyone listening to me right now that has any infirmity in their body, जो भी मुझे सुन रहे हैं, यदि किसी be को चंगाई made की जरूरत है, whole प्रभु right मैं now. प्रार्थना Be करता हूँ, healed. चंगाई, Be made whole Yes. right now in Jesus' यीशु name. के नाम में चंगा हो जाए, I come against यीशु के any नाम में चंगाई उन्हें oppression, प्राप्त any प्रभु। torment in the mind, any torment in the ओ soul, प्रभु, जो भी इनके जीवन any में जो भी demonic परेशानी है, attack, तकलीफ है, any वो सारी demonic परेशानी oppression. ओ Satan, I प्रभु, हर curse एक वो your works. शैतानिक शक्ति है, Satan, उसको I यीशु के curse your नाम में works in उसको Jesus' name. काटता Get हूँ, thee उनके hence. जीवन से Go दूर from होने। these people. Go. You have no place here. Go from them. Be filled in the Holy Ghost, Pastor. यस, Be शैतान तो filled निकल in the जाए, Holy तेरे पास कोई Ghost सामर्थ्य, तेरे पास and कोई जगह नहीं fire है in इन लोगों Jesus' के name परिवार right में, now. सेवकाई में। Be तो filled in the Holy Ghost and fire right now. Receive from inside. Those of you who have been baptized in the Holy Spirit, stir up that holy gift. Stir up that holy gift of the Holy Spirit, as the scripture says. Those of you who have the Holy Spirit, Yes. stir up that heavenly gift, as the scripture says. Yes. Be filled. Times of refreshing come from the presence of the Lord. The presence of the Lord is within you. Amen. If the Holy Spirit dwells within you, the presence of the Lord is within you, and times of refreshing come from the presence of the Lord. Be refreshed.
Be सबको भर के refreshed कर in दे Jesus' पिता। name. Be invigorated in Yes, Lord. Jesus' name. Yes. Be encouraged in Jesus' name. Be strengthened in Jesus' name. And we give you all the glory, Father, in the name of Jesus. Amen. Amen. Yes. I love you all, and I look forward to Amen. seeing you next Amen. week. Thank you. Amen. Yeah. Thank you. Thank you very much, sir, Absolutely. for the wonderful and powerful prayer. Powerful for us. I hope if, today I am personally I am very much blessed today, Praise the and Lord. I hope everyone is blessed today. Praise God. I am blessed as well. I Yeah. love you all very Thank you. much. सबको जय मसीह. Amen. Okay, sir. See you And next please week. pray, guys. Pray that the world opens up again. Yeah. Pray that the travel opens up. I would love to come and be with you sometime very soon, and we can see each other face to face. So pray, yeah, pray toward that. Let's believe together for that. Amen. Amen, Brother Mohan. God bless you all. I love you all. God bless you. Have a great day. Night. Bye.